Welcome back to my official podcast. This is Gaurav Ayaan, and look, it was once again a one-sided match, but particularly I am very happy with the Kolkata Knight Riders because Kolkata Knight Riders had not had a very good record against Mumbai Indians, but they have hammered, they have literally hammered Mumbai Indians, and now they have won this match by 7 wickets. So we will discuss this match on detail with none other than Saurabh sir. Saurabh sir, welcome back to my show, sir. Yeah, welcome everyone, and thank you, Gaurav. It was wonderful watching this match, Yeah, and this is a आप kind तो of सर मुझे सॉरी टू इंटरप्ट मुझे तो आपसे एक वो डायलॉग बोलने का मन कर रहा है खुश तो बहुत होंगे आज आप yeah, because we have hardly won against Mumbai Indians ever, yes so it's a yes kind of a surprise win for KKR. But they yes played very well because the young players played very well because yes Mumbai is a much more experienced team. They started very well. Their first 10 overs, they Mhm. were actually much ahead. The power play also, they played very well, but they came back very well with the spinners. The spinners actually got the run rate down, and from there on, they were able to hold on to it. Though towards the end, Prasidh Krishna gave away a few runs, but batsmen came back very strongly. Really a great package, it seems to KKR has found in Venkatesh Iyer. So overall, this looks good. KKR moves into a top four of the in IPL 2021. So we're looking forward to some great matches going ahead. So this win must be very special because the manner which they have Kolkata Knight Riders have they played, it looked like it's the Ian Morgan England team. Obviously, the Ian Morgan has been the captain, but the team wasn't playing in the way as much to as their expectation in the first phase. But in the second phase, they are literally they are. It looks like by watching from our home, it looks like England team are playing. It's like their criteria is very simple. No matter what the score is, they just have to go bang, bang, bang. Yeah, it's a similar concept of Brendan McCullum as well. If you remember, in the first half also he was talking of that we have to play fearless cricket, and then he told about that we are talking everything but not doing it. So probably people have to be changed, and so that was the significant change that happened, I guess, because they pushed Nitish Rana down and got in Venkatesh Iyer, and I think as we could see from the way Tripathi and Venkatesh Iyer has been playing, it's like from whatever happens, they have to go for their shots. So, and these bowlers were good bowlers. Means if you look at Adam Milne, you look at Trent Bolt, you look at Jasprit Bumrah, three top class bowlers, and they were really taken to the cleaners because continuously the run rate was at 10 runs per over. So it's a fantastic mindset that the KKR team is playing with. And I must add that both Narine and Russell, both of them looks very good. So on the field, so this is an additional advantage for KKR. सर अगर हम डिटेल में देखा जाए तो मतलब कहते हैं ना कि मतलब कोलकाता नाइट राइडर्स की अगर मैं जिस जिस वक्त मतलब आईपीएल 2021 स्टार्ट हुआ था अब मैंने कोलकाता नाइट राइडर्स टीम का प्रीव्यू किया था आईपीएल स्टार्ट होने से पहले ठीक है मैं अपनी बता रहा हूँ आपको मुझे ऐसा लग Mhm. रहा था कि कोलकाता नाइट राइडर्स हैज द बेस्ट प्लेयर वेदर इट इज टॉकिंग अबाउट द इंडियन क्रिकेट और वेदर आई एम टॉकिंग अबाउट द ओवरसीज प्लेयर और इतना ही नहीं उनके पास उसी इंडियन प्लेयर के और उसी ओवरसीज प्लेयर के प्रॉपर रिप्लेसमेंट भी थे ठीक है ऐसा Mhm. नहीं कि वो सिर्फ उन्हीं पर रिलाई करते थे बट Mhm. पता नहीं क्या हो रहा था फर्स्ट फेज में ऐसा हो रहा था कि वो कहते हैं ना वो प्लेइंग 11 तो ठीक ठाक उतार रहे थे बट वो कहते हैं ना कहते हैं ना गाड़ी को घसीट के चलाया जा रहा था वही हाल था कोलकाता नाइट राइडर्स को कहते हैं ना दे वर मिसिंग समथिंग तो आपको क्या लगता है कि वेंकटेश अय्यर वाज द गाय हु मेड द लॉट ऑफ डिफरेंस फॉर कोलकाता नाइट राइडर्स इन सेकंड फेज ऑफ द आईपीएल Yeah, as of now, that is what it looks like because या he seems to be a very aggressive opener who just knows how to play the shots. Right now, everything is coming out यस well. But यस I think, but you have to understand that just one person
cannot make all the difference. So I think this break has worked very well for KKR. Means if there was no break, just bringing in Venkatesh Iyer wouldn't have changed anything. Probably KKR would have won one match, but nothing would have happened. See, cricket is a lot about momentum and about confidence. So this break has worked in KKR's favor. You have to think that everybody got a break. They were not doing well. They came back afresh and they have started thinking that this is a new tournament. So it's a 7-match tournament and we will win 6, and then probably the 2 finals and we can win. So they are talking in that way. They are thinking in that way. Advantage is that they have the coach and the captain both have a similar kind of a mindset, but only the mindset will work when people execute. So right now the execution is happening, and all of us have watched cricket for a long time, right? You, me, and we know very well when the confidence goes well, then the average people also starts playing very well. So this is the thing, it's happening. You have to look at the top 4 of KKR. Means if you leave out Ian Morgan, if you add Nitish Rana there, it is not a very experienced lineup because even Subman Gill has not played for a very long time in international cricket. And Rahul Tripathi is an uncapped player, Iyer is uncapped, and Nitish Rana is almost uncapped. He just played against Sri Lanka recently. So this is a very inexperienced team as far as things are concerned. But what is clicking is the mindset that we will go all out. The captain and coach must have told them that even if you fail, you will still be in the team and nothing is going to happen. So that confidence is working for KKR. But I think one thing that KKR needs to understand, the fans need to understand, is this batting is backed by a very good bowling unit, because the bowlers are not going for a lot of runs. So it is not that KKR is chasing 200. So that has been an advantage because their spinners have bowled well, their pace bowlers have picked up wickets. So overall, it looks like a very much of a team game that is happening. Last day, both of us, you and me, were speaking about 2014 when at the back end KKR won all the matches. So Yes, will it be a same thing that is going to happen? We will see, sir. because Mumbai, Is that last time in yes. 2014 KKR won. KKR actually won against Mumbai at the Wankhede Stadium. So this seems to be a similar kind of a scenario, beating Mumbai. सर जैसा कि आपने एक पॉइंट बहुत अच्छा रेज किया, क्रिकेट इज ऑल अबाउट दिस कॉन्फिडेंस गेम। कॉन्फिडेंस अगर एक एवरेज प्लेयर में भी रहता है ना, तो वो मतलब उसको मतलब बाकी प्लेयर से काफी अलग कर देता है, ठीक है। सो क्रिकेट इज ऑल अबाउट द कॉन्फिडेंस गेम। एक चीज और, आपने एक चीज बहुत और अच्छा अच्छा पॉइंट आउट किया कि द बैट्समैन हैजंट बीन टेस्टेड येट, बिकॉज इसके पहले वाले मैच में कुछ 70 80 90 व्हाटएवर द स्कोर वाज, आई कांट रिमेंबर प्रॉपर्ली, तो उसमें भी टेस्ट नहीं हुए। आज भी considering they had to face a quality bowling lineup against the Mumbai Indians, but the score was below 160, so that also helps them to play freely. Right. So, but if you look at the overall, all the 8 teams, which team, according to you, has the best bowling attack? Probably, I think Mumbai had this quality bowling lineup. If Yes. I don't count So it is Kunal Mumbai Pandya. or Delhi, right? Delhi and Mumbai are Yes, two teams which has the best team. Delhi has the best bowling lineup. If you talk about this bowling lineup against all the Yeah. IPL team, because they had the quality pace attacks, they had the quality spinners also. Spinners. So if you talk about the bowling lineup, I think Delhi Capitals has everything. Yeah. So Delhi is number 1 and Mumbai is number 2 as far as bowling Yes. is concerned. So Yes, for and KKR, Mumbai, I think the main Mumbai is missing. I think they have Rahul Chahar, but you can't count Kunal Pandya as that much of a specialist spinner as the they other have a spinner as problem in other the team has. spinning department. They have a Yes, problem in yes, the they're spinning lacking with the spinner. department. Yes, they are lacking with the spinner. उनके पास सिर्फ एक राहुल चहर को छोड़कर और कोई बैकअप स्पिनर नहीं, जो राहुल चहर मान लीजिए टैंडम में बॉलिंग करे तो उनके साथ भी उधर से भी एक एक्स्ट्रा प्रेशर बना रहे। Again, Kunal Pandya is the same kind of a bowler is what Ravindra Jadeja is for India. उनका मतलब कहते हैं ना माइंडसेट वही रहता है कि बैट्समैन को कंटेन किया जाए, विकेट लेने की मतलब कहते हैं ना वो
माइंडसेट नहीं रहती, उनको लगता है कि बस बैट्समैन को रोका जाए और वो फिर किसी तरह हिट मारने में आउट हो जाएगा। सो राहुल चहर जैसे गेंदबाज जो है, चाहे चाहे वो क्या नाम है अक्षर पटेल हो, चाहे फिर जैसे दिल्ली कैपिटल्स में चाहे रवि अश्विन हो, वो लोग मतलब बैट्समैन को आउट करने की कोशिश करते हैं। दिस इज व्हाट माय पॉइंट इज। और मुंबई इंडियंस स्पिनिंग के मामले, स्पिन क्वालिटी के मामले में ही थोड़ा सा पीछे रह जा रहा, बट दे हैड दिस क्वालिटी पेस अटैक। And Piyush Chawla is playing for Mumbai or for Chennai? Chennai. मुंबई, मुंबई, He is in Mumbai, right? यस, So, but the problem is that Kunal Pandya bigs in that batting, and yes. And unfortunately, Piyush Hardik Chawla Pandya hasn't is been not that playing. kind of a bowler, sir. Piyush Chawla hasn't been that kind of a bowler. I don't know what happened to him, but चेन्नई सुपर किंग पहले जब कोलकाता ने उनको छोड़ा, फिर चेन्नई ने उनको पिक किया, चेन्नई ने भी उनको 2 साल खिलाया उस तरीके की, वो अब स्पिनर रह नहीं चुका। हो सकता है कि अब उनका कहते हैं ना, हर एक Time अच्छे खत्म हो क्रिकेटर गया. का एक डाउनफॉल आता है, तो उनका भी अब डाउनफॉल आ चुका है। अब उनकी वो गेंदबाजी, पहले पीयूष चावला के साथ ये होता था कि नो मैटर व्हाट उनके Picks साथ up हो रहा होगा wickets. डोमेस्टिक क्रिकेट में, बट वो आईपीएल में आके हमेशा अच्छी गेंदबाजी करते थे। बट अब वो उस तरीके का हो नहीं रहा है, और मतलब कहते हैं ना, सारे बैट्समैन और सारी टीम उनको पिक करना भी चालू कर चुकी है, और सारे लोग हिट करना चालू कर चुके हैं। तो वही प्रॉब्लम है, इसलिए पीयूष चावला की तरफ जा नहीं रहा है। बट देखना पड़ेगा मुंबई इंडियंस के पास और कोई मुंबई इंडियंस के पास और कौन से स्पिनर है। आई थिंक दे हैव अ जयंत यादव आल्सो। Yeah, but again, Jayant Yadav is not really a wicket taker, if you look at it. यस, But he is a very wicket-to-wicket bowler. He's better than यस, इज अ Krunal विकेट Pandya. He's कीपर। better than Krunal Pandya. But बट I think अगेन one of the वो biggest problem is that Hardik Pandya is not playing. So बिल्कुल। that's a और big एक चीज और सर, concern. T20 में माइंडसेट में आ जाता है ना कि हाँ ये बंदा बैटिंग भी कर लेता, तो वो फिर Hmm. कहते हैं ना, कुणाल पांड्या उस टीम में मतलब कहते हैं ना आ जाता है। और प्लस हार्दिक पांड्या का क्या है नहीं क्या नहीं, उस पर भी बात करेंगे। बट सबसे पहले थोड़ा सा अगर हम गेंदबाजी की बात कर ले, सबसे Hmm. पहले कोलकाता की गेंदबाजी की, तो शुरुआत में ऐसा लग रहा था कि मतलब जिस तरीके से मतलब नीतीश राणा को पहला ओवर करवाया गया, तो ऐसा लग रहा था कि पता नहीं किस माइंडसेट से आज कोलकाता आई है। और रोहित शर्मा, और यही कमेंट्री में भी यही बातें हो रही थी, और दे वर राइट कि रोहित शर्मा अचानक से ब्रेक में आ रहे हैं, और अचानक से आप ब्रेक से आ रहे हैं, और वो आप उनको पार्ट टाइम स्पिनर लगा दिए हैं। तो रोहित शर्मा को थोड़ा सा समय मतलब बहुत अच्छा उनको एक तरीके से ना बर्थडे गिफ्ट मिल गया था, तो उनको मतलब थोड़ा सा आगे खेलने का मौका मिल गया। वैसे उन्होंने बहुत ज्यादा कहते हैं अपनी अपनी जो स्टार्ट को बड़े स्कोर में कन्वर्ट नहीं किया, बट एक जहां पे अगर आपको लग रहा था कि सर शुरुआत के 6 ओवर 7 ओवर में उन्होंने काफी अच्छा स्टार्ट ले लिया था, और आपको बोला जाए कि दे विल एंड अप गेटिंग 156 or 157, you would have been very happy in this position. Yeah, of course, because Quinton de Kock was playing very well. He was timing the Yes, ball very well, and he was timing the ball yes. against the Pacers very well. So Hmm. their opening partnership was very good. But I think the concern for Mumbai Indians as well as for the Indian cricket team is the form Yeah. of Surya Kumar Yadav and Ishan Kishan. Both Ishan of them Kishan. are not playing well, and both of them are part of the Indian team in the World Cup. Because you have to सर एक realize चीज both मेरा of आपसे them did सवाल not है, play सर well. मेरा आपसे एक चीज सवाल है कि सूर्य कुमार यादव को देखकर मुझे लगता है ना कि उनके पास फॉर्म लगी हुई है, और मैं आपसे इस चीज के बारे में जानना चाहता हूँ कि क्या किसी प्लेयर की फॉर्म लगी हो, तो क्या उसको उसको ये कॉन्फिडेंस आ जाता कि मैं हर बॉल पे शॉट लगा सकता हूँ, और वही उसका कभी कभी डाउनफॉल हो जाता है? क्योंकि सूर्य कुमार यादव को भी मैं देख के लग रहा हूँ, देख के मुझे ऐसा लग रहा है कि वो हर बॉल पे वो शॉट मारना चाहते हैं। उनको लगता है कि मैं ऐसा कोई बॉल नहीं है जो उसको मैं मतलब कहते हैं ना रेस्पेक्टफुली, आप T20 में भी 1-2 बार रेस्पेक्टफुली खेल सकते हो, लेकिन वो आते ही ऐसा लगता है कि उनके उनके पास हर शॉट है, उनको हर बॉल पे मारना है, ऐसा लग रहा था कि जरूरी है। और आज भी वैसा लग रहा था कि इट लुक लाइक इट वाज अ नथिंग शॉट। देखिए हम लोगों को मानना पड़ेगा that there is a different kind of a mindset that is working in T20 these days, and this यस, was started by England, started with Ian हाँ, Morgan, that बिल्कुल, whatever बिल्कुल। happens we will keep on hitting. So Surya Kumar Yadav and Ishan Kishan, both of them falls into that group, along with you can say Prithvi Shaw also. So this is the new generation of working. Means this has started. The innovators are England cricket team, led by Ian Morgan, and these people are following that. So this is going to happen because there will be a time. Like if you look at Ian Morgan, the way he got out today, there was not required to hit that shot with 6-7 runs left, but he still went for it because that is the mindset they have. So these people like our players like Surya Kumar Yadav as well as Ishan Kishan, Prithvi Shaw,
you will find them also getting out of this kind of sorts. So we have to accept that. But Okay. the thing is that you have to realize that for what specific reason you are there, and Okay. probably uh, what England does and what India does is a little different, because England bats up to 9-10, whereas for India it is not so deep batting. So naturally, our batters have to think a little bit differently than the English players. Okay, sir. How good was Kolkata Knight Riders fast bowler, considering Prashant Krishna went for some run in the first over and obviously his last over, but he did picked up some wicket. Lockie Ferguson, he's been revelation. I don't know why Kolkata Knight Riders keep on playing Pat Cummins, because they've invested a lot of money in him, but I didn't like the Pat Cummins because he wasn't picking too many wickets, which Kolkata Knight Riders badly needed, they were expecting a lot from Pat Cummins, and he wasn't taking too many wickets either in the starting over or either in the death over. But by seeing, I'm seeing about seeing with the Lockie Ferguson that he's as good as with the new ball also, and he is quite remarkable with the death over bowling also. He bowls with a difficult length. He has a very good bouncer. He is very good with the slow ball also, and he has a very good Yorker also that surprises everyone. So Lockie Ferguson has been a big revolution for Kolkata Knight Riders. Saurabh sir. Yeah. आपके पास अगर दो ठो फोन होगा, if you have two phones, one iPhone and one Samsung phone, will you be using the Samsung phone continuously or you will be using the iPhone? Because finally 1 लाख रुपया दे के फोन खरीदे हो तो उसको तो यूज भी करना पड़ेगा. बिल्कुल बिल्कुल जब बिल्कुल जाएंगे फैमिली का फंक्शन में आईफोन ही लेके जाएंगे ना. सो बिल्कुल बिल्कुल. दिस इज व्हाट हैज हैपेंड विद केकेआर एंड पैट कमिंस. 15 करोड़ खर्चा करेंगे तो उसको खिलाना भी पड़ेगा, नहीं तो बैठा बैठा के इतना पैसा काहे देंगे. But the problem is he has never been a very good T20 bowler. KKR Yes. paid too much, so I think this is a blessing in disguise that he is not did not come, because otherwise KKR Yes. would have played him again. And Yes. whereas Alex Ferguson is very underrated T20 bowler, he is a very very good bowler. So I think it is good for KKR that Pat Cummins did not come back, and they got the opportunity to play Ferguson, and he Lockie has been, Ferguson. yeah, Lockie Ferguson. And the best thing is that all his Yorkers are coming out very well. Yes. And I think this is something KKR must have practiced, because last match Andre Russell was also hitting a lot of Yorkers. Even Prasidh Yeah. Krishna also, this one or two balls were Yorker length. So I think they have been practicing that. And Ferguson was very good. I'm little disappointed with Prasidh Krishna because of the no Yes. balls and all. And But I think, overall, and in the final over which he was bowling to Karen Pollard, I think he got carried away with this, what you call it, what do you call it, with the talking with Karen Pollard, and he was going after the uh, Karen Pollard, and he got carried away. I think he got carried away. It's yeah. nothing wrong with that. You are going after the opposition batsman. It's nothing wrong about that. But don't you make sure that you don't get carried away, especially in the T20 format. Correct, correct. You are right, because Prasidh Krishna looked a little jaded today. Hopefully, he will Yeah. be able to come back in the next match better. Yeah. Moving on, I think we need to talk about the man of the moment, Right, Venkatesh Iyer. I think correct. I think if you see with the Kolkata Knight Riders team, you see only one man has made the difference. People will not talk about that. Obviously, Kolkata Knight Riders has been bowling also well in the two matches that they have bundled out. I don't. I'm just forgetting the matches which Kolkata Knight Riders played earlier RCB, prior to this match. RCB. RCB. They have got bundled out RCB very cheaply, and now with the strong batting lineup like Mumbai, they have managed to strict Mumbai under 160. But you have to give a credit to player like Venkatesh Iyer. He just come in this limelight, and he just went away with his flow, and he looks like looks batting really easy. मतलब वो आते ही और पहली बॉल पे हिट करना चालू करता है, and it's not like a blind hitting. No, no, no. He hit Looks to be a proper calculating. batsman. बिल्कुल. और वो कैलकुलेटिव शॉट्स खेलते हैं, और when he hits it, stay set. That's the main thing. और
कहते हैं ना बैट का शेप, मतलब वो, मतलब कहते हैं ना आंख बंद करके कोई शॉट नहीं लगाते हैं, प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट्स खेलते हैं, पुल शॉट पे काफी ज्यादा अच्छे हैं। ठीक है, लंबे होने का उनको फायदा भी एक मिल जाता है कि वो पुल शॉट और कट शॉट पे काफी अच्छा है। और एक ऑफ साइड में उन्होंने, मतलब कहते हैं आपको पता ही है कि जो लेफ्ट हैंडर ऑफ साइड में शॉट खेलते हैं तो और भी कमाल के लगते हैं। ही और वाज भी क्वाइट अच्छा है. रिमार्केबल। Yeah, he was, and before the IPL, he actually scored 198 runs, based on which KKR had actually picked him up. So it Right. looks like that he is a kind of a very positive mindset batsman. He bowls as well. Just to remind everyone, he bowls as well. Medium pace, I think that is what he bowls. KKR has not yet means not him asked him to bowl, but he's Yeah, kind of KKR batting. needed Venkatesh Iyer to bowl, obviously, because they have a proper two matches considering the bowling in the department. They didn't need any Venkatesh Iyer or probably Nitish Rana, considering Yeah. Nitish Rana bowled only one over today. Yeah, because the balance looks very well, but I think Yes, what Iyer has brought into the team is the fearlessness that, fearless. yeah, because if you look the way Subman Gill was also playing, right in the second Yes, ball, he hit 1 for 6. So basically, yeah, the entire mindset has changed that it is nothing holding back. We will go for everything in the first 6 overs. So there is chances of this kind of a mindset can lead to people getting bowled out for cheap runs. But I think the yes. KKR's That's batting lineup is very big because it goes up to Sunil Narine at number 8. So they yeah. have that batting lineup because of which they are playing in this way. But hats off to Venkatesh Iyer for the way he has turned around KKR. And don't forget the Rahul Tripathi. He was Yeah. batting quite remarkable. Considering I was looking at some of the shots which he was sweeping the spinner, it was quite remarkable, and he was hitting in the gaps also. Yeah, he was hitting in the gaps, and then he was very lucky also. Everything was Yeah, coming out well. So, and this yeah, happens with Rahul Tripathi in every IPL. He plays a couple of innings every IPL where he is very lucky and everything comes out. Again, everything depends on how much consistency he has. See, nobody doubts his talent. He's very talented, he's very positive, no, always a smile in his face. So, and he has been a very good domestic player for Maharashtra. But Maharashtra. yeah, but unfortunately, he has not been consistent. So KKR has Okay. to hope that this और is the उनके season साथ एक when he और भी shows अच्छा चीज consistency. है सर, राहुल त्रिपाठी के बारे में एक और अच्छा चीज है सर, मुझे जरा अच्छा लगता है। ठीक है, उनको कहीं पे भी खिलाया जाए वो कभी भी मना नहीं करते कि नहीं मैं यहाँ पे बैटिंग नहीं Hmm. करूँ। मुझे याद आता है एक बार 7 नंबर पे भी बैटिंग की है कोलकाता नाइट Hmm. राइडर्स के लिए, जहां उन्होंने शायद मैच फिनिश किया था या ऑलमोस्ट फिनिश, वो शायद जो भी है, जीताया था, बट उन्होंने क्या जीताया किया। था. हाँ, 17 बॉल पे या में कुछ 40 ऑड उन्होंने स्कोर किया था। ठीक है, ओपनिंग बैट्समैन भी है, बट यहाँ पे नंबर 3 पे खेल रहे हैं। मुझे याद है वहां उनकी उनकी जो उनका जो करियर था वो मेरे ख्याल से पुणे टीम से उन्होंने अपना पिकअप किया था कि उनको ओपनिंग वहां से करें, वहां पे सब उनको पहचानने लगा। अच्छा, राहुल त्रिपाठी नाम कोई बैट्समैन है। प्रॉब्लम वही, मैं उनके बारे में अच्छी क्वालिटी ढूंढ रहा था कि उन वो हर जगह पे बैटिंग किया है और उन्होंने कोई भी कंप्लेन नहीं किया है। Yeah. He first came into the limelight by hitting KKR. KKR या के साथ एक मैच में 91 रन मार के KKR को हराया था. So that is how he हम्म, came to the limelight. And you are right that he played in one of the matches, few matches at number 7 for KKR. एक तो यस। मैच में काफी अच्छा खेला था और ओपनिंग किया था last year also, and now he's playing at number 3. So he is a kind of a player who is adjusting to every situation. He is a very And good you team need man. this If kind you of a look player at in it, your he's team. always smiling, always smiling. Yes, and you need this kind of a player in your team, because आप हमेशा ये नहीं बोल सकते कि नहीं मेरा मेरा पोजीशन यहाँ पे है, मैं यहाँ बैटिंग करूंगा। Hmm. ऑल दिस T20 फॉर्मेट में आपको फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा, और आजकल के क्रिकेट में तो आपको फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए ही चाहिए कि आपको टीम मैनेजमेंट जहां बोले आपको वहां खेलना पड़े। खैर, जी. आज के लिए तो इतना ही पहले रहने देते हैं। अब हम लोग अपने अगले सेगमेंट पे थोड़ा सा चलते हैं, हिट Hmm. एंड मिस। तो सौरभ सर, आप पहले ये बताइए कि आज के मैच में किसका बहुत अच्छा दिन था, हिट था वो, और कौन सा प्लेयर मिस आउट हो चुका है। देखिए हिट में तो वी हैव टू गो विद वेंकटेश अय्यर एंड Yeah. Rahul Tripathi in the batting side, and on the bowling side we have Ferguson. That's the number 3 for from the Mumbai कोलकाता। Indians. Yeah, these are the 3 players from Kolkata, and for from Mumbai.
it is Quinton de Kock and Bumrah. These were the two people who were hit because Quinton de Kock hit a 50 and Bumrah was the only person who took wickets. He took 3 wickets. So these are the 5 hits you have. As far as the misses are there are too many misses from Yeah. Mumbai Indians because Rohit Sharma did not click in the way he clicks generally. And though we cannot say that he's a hit or a miss, he's a kind of an average. But Krunal Pandya, Rahul Chahar, all the bowlers were not up to the mark. Their bowling unit today flopped pretty badly. So the entire bowling unit has been a flop other than Bumrah. So that's a complete miss out. And for KKR, Prasidh Krishna's bowling and the no balls was a big miss. Slightly So this is concerned. what I think. Slightly Yeah. concerned. Okay. Yeah. We have to take some one question because obviously Uh, Amit Agarwal has just asked to you. I want to ask with Sina sir that about Venkatesh Iyer. Can Iyer also bat at number 6 in T20 or does he bat only in the top order? Can he be a backup for Hardik Pandya in a World Cup? I Yeah. think So I think we just are on 2 matches. speculating. Yeah, we are speculating a lot earlier. I think. या बिकॉज सी हार्दिक पांड्या के बैकअप के नाम पे हम लोग विजय शंकर को क्रिकेट वर्ल्ड कप खिला दिया एंड ended up a huge flop. So Yeah. Venkatesh Iyer has to play at least one full season to for us to understand how good he is. Right now, we do not even know how well he will bowl because he has yet to bowl Yeah. in IPL. So we will have to wait. Yes. He is not yet ready. He is a good talent. We have to. Okay, moving on to the next segment, sir. And next segment is about the tomorrow's match, and that is a big one. That tomorrow's match is CSK versus RCB. And मैं अपना बता देना चाहता हूँ सर मेरी कल की टीम CSK ही है. Yeah, unfortunately, even for me also, I think it will be CSK. But the thing is that I will go with RCB because you have gone for CSK. Because then there Okay. will be fun, right? So it should be Yeah. RCB versus CSK. But I have a background of RCB. Why RCB? Because I have stayed in Bangalore for 11 years and my Wow. in-laws are in Bangalore. मतलब मेरा सास ससुर सब Bangalore का ही है. So Okay. I have a reason why I prefer RCB. So let's see who Okay, sir. wins. ओके केके ने एक बोला है कि आरसीबी जीतेगी लेट्स होप क्या होता कल लेकिन सर आरसीबी कल के मैच में अपना क्या मतलब कॉम्बिनेशन चेंज करना चाहेगी किसको पिक करेगी किसको नहीं आपको प्लेइंग 11 में कुछ नजर आ रहा है चेंज करने के लिए वो आरसीबी चेंज करेगी आरसीबी को क्या कुछ चेंजेस सही में चाहिए आई एम नॉट वेरी श्योर बट आई थिंक दे नीड अ प्रॉपर नंबर 3 बैट्समैन और या मुझे लग रहा नंबर कि 3 में मैंने सुना है कि मोहम्मद अजरुद्दीन कीपिंग भी कर रहे थे ठीक है प्रैक्टिस मैचेस या में कुछ तो यू नेवर नो क्योंकि मोहम्मद अजरुद्दीन को अभी तक खिलाया नहीं गया है बट लेट्स सी व्हाट हमको हैपेंस अगर क्योंकि पूछिएगा आई वुड वांट विराट कोहली टू ड्रॉप टू नंबर 3 एंड अजहरुद्दीन टू ओपन सर ये तो पहले विराट कोहली से भी सवाल पूछना पड़ेगा कि क्या वो खुद नंबर 3 पे बैटिंग करना चाहते हैं कि नहीं ठीक है राइट आई थिंक ही डजंट वांट टू बैट एट नंबर 3 दैट्स व्हाई ही इज बैटिंग एट द टॉप और कंसीडरिंग अगर मैं अपनी टीम की बात कर लूं सीएसके की टीम की बात कर लूं तो मैं अंबत्ती रायडू को पता नहीं कल अंबत्ती रायडू खेलते हुए मुझे नजर आए कि नहीं आएंगे क्योंकि उनको चोट लगी है लेट्स सी क्योंकि टूर्नामेंट आगे मतलब अभी मैचेस कुछ बचे हुए तो सीएसके ऐसी टीम है कि वो कहते हैं ना अभी भी मतलब वो रिस्क नहीं लेना चाहेगी ठीक है अपने प्लेयर्स को लेकर वो काफी ज्यादा वो है कि मतलब अब वैसे भी अच्छा परफॉर्मेंस भी दे रहे तो वो हो सकता है ब्रेक देंगे बट अगेन दीपक चहर उनको वो भी थोड़ा सा कहते हैं ना लिम्प करके गए थे इंजर्ड है वो लास्ट हाँ ओवर से करके गए थे तो वो भी देखना पड़ेगा कि वो कितने फिट अवेलेबल होते हैं कि नहीं होते हैं बट अभी भी सैम करन फिट एंड अवेलेबल है तो सैम करन खेलेंगे कि नहीं खेलेंगे तो सैम करन खेलेंगे तो बट आई won't drop Josh because प्रॉब्लम ये हो जाता है कि क्रिकेटर्स हो जाते हैं अगर आप देखेंगे सीएसके की टीम में कोई ऐसा अटैकिंग बॉलर नहीं नजर आता है जो आपको किसी भी मोमेंट में आके विकेट दे सके नो मैटर व्हाट जस्ट हेजलवुड अच्छी गेंदबाजी करे पर ना करे बट ही इज अ स्पेशलिस्ट फास्ट बॉलर ठीक है आपको पता है वो क्या नाम है
शार्दुल ठाकुर कभी भी एक्सपेंसिव हो सकते हैं। शार्दुल ठाकुर, सैम करन, कहते हैं ना वो भी, मतलब कुछ He can ओवर्स आपको also अच्छे get दे। expensive. यस, ही कैन आल्सो बी एक्सपेंसिव। दीपक चहर का आपको पता है कि वो आपको पावर प्ले में ही ओवर दे सकते हैं, ठीक है। Hmm. मोइन अली, रविंद्र जडेजा आपके अटैकिंग ऑप्शन होते ही नहीं है टी20 में, और फिर मोइन अली को आपको मिडिल ओवर में ही निकाल सके। मेरा हमेशा से ख्याल रहता है, और इस साल आईपीएल जब से स्टार्ट हुआ है, नो मैटर व्हाट सीएसके कितना भी अच्छा करे, लेकिन मेरा हमेशा से एक रहता है मुंबई सीएसके टीम को लेकर, आई थिंक दे आर प्लेइंग विद टू मेनी बैट्समैन, ठीक है। और ये मैं Hmm. हमेशा से बोलता रहा हूँ, नो मैटर व्हाट, बिकॉज बॉलर्स विन यू द टूर्नामेंट, नॉट द बैट्समैन। और मुझे ऐसा लग रहा कि दुबई जो अगले साल यूएई में उनके साथ हुआ है, ठीक है, बैटिंग उनकी क्लिक नहीं कर पाए थे, तो इस बार इतना उन्होंने अपने बैटिंग को इतना स्ट्रांग बना लिया है कि अगर आप देखेंगे सारे बैट्समैन ही नजर, जॉस हेजलवुड खेलेंगे तो जॉस हेजलवुड को छोड़कर सभी सारे बैट्समैन नजर आएंगे आपको। Savvy batsman. दीपक चहर तक बैटिंग कर लेते हैं, तो आई डोंट थिंक Hmm. उतना भी ये करना चाहिए उनको। ऐसा करना चाहिए कि मेरे हिसाब से एक किसी भी बैट्समैन को, इंडियन बैट्समैन को ड्रॉप करके एक बॉलर को ऐड कर लेना चाहिए। दिस इज व्हाट आई थिंक। Yeah, and I think if they have to drop someone, they should drop Suresh Raina, if you यस, ask me, because he looks like यस, completely out of sorts. सही में या रिटायर्ड प्लेयर दिख रहा है वो, उसका बैटिंग देख के। बिल्कुल। वो ही डजंट, मुझे एक डेल स्टेन की वो उस दिन उन्होंने कहा था, डेल स्टेन ने, ही लुक लाइक अ स्कूल बॉय प्लेयर। मतलब ही डजंट वांट टू Yes, स्टे ऑन द पिच एंड ही डजंट वांट टू फेस द क्वालिटी बॉलिंग लाइनअप। वो yeah. उनको ऐसा लगता है So कि अगर let वो him में है let तो him sit चार on the पांच bench बाउंसर and पड़े। come for, yeah, let him sit on the bench and come for fielding. वही उसको सबसे या ज्यादा पसंद है, so let him field. बट आपको पता है कि सर, मुंबई एंड सीएसके टीम डजंट लाइक टू बी टू मेनी डू chopping and changes. Yeah, These two team doesn't do chopping and changes no matter what. खैर रहने देते हैं आज के लिए इतना ही, कल देखते हैं क्या होता है क्या नहीं देते, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सौरभ सर, आप मेरे शो में आए। इट वाज अ प्लेजर टॉकिंग टू यू अगेन। आई होप यू हैव आल्सो एंजॉयड दिस शो, बिकॉज ऑब्वियसली केकेआर हैव जस्ट हैमर्ड मुंबई इंडियंस। yeah. Thank you, Gaurav. It was pleasure speaking to you. Looking forward to tomorrow's match. Good night. Okay. Thank you. Till then, guys, do like the video. Don't forget to subscribe and hit the bell icon. Till then, guys, we will meet tomorrow after the CSK versus Bangalore match. Till then, guys, good night. Take care.